staffing process, and we have done up to the training and development. Let us recapitulate them. The first step in staffing process is estimating the manpower requirement. We find the number and type of persons required to perform a job and to achieve the goals of the organization. After determining the number and types of persons required, the second step is to recruit, means to attract them and to search them and to attract them and to motivate them so that they apply for the jobs in the organization through the advertisement. And after this, I will select the best candidate, and after selection there is a placement and orientation. Placement means when a person occupying the position for which the person has been selected, or occupying the position or post for which has been selected, is called the placement. And orientation means introducing the selected employee to the other employees and familiarizing him with the rules and policies of the organization. And after placement and orientation, training is given to the employees so that they perform better and contribute to the organizational goals effectively and efficiently. And by this, the organization not only able to attract but also retain its talented people. And after this, next step is performance appraisal. After the employees have undergone a period of training and they have been on the job for some time, there is need to evaluate their performance, means to check their performance. And performance appraisal means evaluating an employee's current or past performance. Evaluating means here to check the employee's current and past performance against certain predetermined standards. And employees expected to know what are the standards, कि किसके against उसको judge किया जाएगा. And superior is to provide the employee feedback on his or her performance. इसकी performance कैसी है, बेटर है या उसको थोड़ी सी और इम्प्रूव करने की जरूरत है. Therefore performance appraisal include defining the job, कि employee को क्या करना है, and standards are given to him that these are the standards against which he or she is appraised. And appraising the performance. Appraising the performance means evaluate or check their performance, and after that providing the feedback. It is the process of performance appraisal. And next point is promotion and career planning. Promotion means place the employee in the position of increased responsibility, means more pay, more responsibility and job satisfaction. मैनेजर्स देखो, जो भी एम्प्लॉयज हैं वो ग्रो, दे वांट टू ग्रो करना चाहते हैं. देयरफॉर उनको हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज. By this, organizations are not able to attract but also retain its talented people. तो एक ऑर्गेनाइजेशन है सपोज, एंड वहां पर कोई चांसेस ही नहीं है, एंड देयर आर नो अपॉर्चुनिटीज सो दैट दे कैन गो. वो एक ही पोजीशन है और उसी पोजीशन पे रिटायर हो रहे हैं, तो नोबडी वांट्स टू रिमेन इन दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एवरीबॉडी वांट्स टू ग्रो. वो चाहता है कि वो आगे बढ़े अपने कैरियर में, उसकी सैलरी इंक्रीज हो, उसका स्टेटस इंक्रीज हो. देयरफॉर जो है employees, मतलब कि जो employees हैं, they must be encouraged to grow and realize their full potentials, and promotions are the integral part of the people career. अगर आपको स्कूल में आपने एडमिशन लिया है और आपको प्रमोट ही ना किया जाए नेक्स्ट क्लास में, तो इस तरह के स्कूल में आप डेफिनेटली यू विल नॉट टेक द एडमिशन. ठीक है, आप भी वही एडमिशन लेंगे जहाँ पर आपकी प्रमोशन होगी, आप प्रमोट होंगे नेक्स्ट क्लास तक. सेम वे द एवरी एम्प्लॉयज वांट टू ग्रो.
वो चाहता है कि उसका स्टेटस इंक्रीज हो, उसकी सैलरी इंक्रीज हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी इट मीन्स, तो हमें एंड ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड करनी चाहिए इस तरह की अपॉर्चुनिटीज सो टू द एम्प्लॉयज सो दैट दे कैन retain its talented people. And last one is compensation. Now, what is this compensation? Compensation means all the form of pay or rewards going to the employees. It may be in the form of direct financial payments like wages, salaries, commission, bonus, etc. in the form of money. And indirect payments like employer paid insurance and vacations. And direct financial incentive, it is of two types, time based and the performance based. Time based means salary and wage, either daily, weekly or monthly. Like जो वर्कर्स हैं उनको जो वेजेस दिए जाते हैं वो डेली बेसिस पर दिए जाते हैं या वीकली. एंड जो एम्प्लॉयज हैं और वाइट कॉलर एम्प्लॉयज हैं उनको हम एक मंथली सैलरी मिलती है आफ्टर एवरी मंथ. एंड द परफॉर्मेंस बेस्ड वेज प्लान. परफॉर्मेंस बेस्ड मीन्स वेजेस और सैलरी पेड अकॉर्डिंग टू द पीस वर्क. जितना प्रोडक्शन किया अकॉर्डिंगली उसको पेमेंट दी जाएगी. वर्कर में भी पेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय हिम और हर. एंड हाउ टू कैलकुलेट द कंपनसेशन, इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. Certain pay plans may be created which are the combination of time based plus incentives for higher performance. तो टाइम बेस्ड तो मिलेगा, they will get their salary or wages after a particular period, and plus incentives, extra incentives for the higher performance. And sometime time based wage or salary as well as performance based. परफॉर्मेंस बेस्ड मीन्स सैलरी और वेजेस तो मिलेगी बट जिसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी उसकी अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बोनस दिए जाएगा एंड अदर एम्प्लॉयज बेनिफिट्स एटसेट्रा. And there are some other factors which influence the design of pay plan or compensation plan. These are the labor laws. Like जैसे हमारी कंट्री में है कि एक वर्कर है उसको 500 मिनिमम वेज देना है, तो आफ्टर कंसीडरिंग इट तो लेबर लॉस को कंसीडर किया जाता है. एंड द कंपनी पॉलिसी, लेबर यूनियन एंड इक्विटी प्रिंसिपल, these are also taken into the consideration while designing a compensation plan.